In this video, I am explaining how to prepare trigonometric table. First trigonometric function is sin theta. To know the values of sin theta for 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree, we need to write 0, 1, 2, 3 and 4. After writing 0 to 4, divide these values by 4 and take square root of the values. Now sin 0 degree is square root of 0 by 4. When 0 divided by any number, it gives 0. The answer is 0. And square root of 0 is 0. So sin 0 degree is 0. Then sin 30 degree square root of 1 by 4, जो 1 by 2 होगा. Sin 45 degree square root of 2 by 4. 2 divided by 4 is 1 by 2. And square root of 1 by 2 is 1 by root 2. Sin 60 degree square root of 3 by 4, that is root 3 by 2. And sin 90 degree is square root of 4 by 4. 4 by 4 is 1. Square root of 1 is 1. So sin 90 is 1. Next trigonometric function is cos theta. Cos theta की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हमें सिंपली साइन थीटा की वैल्यूज का यूज करना है. cos 0 डिग्री साइन 90 के बराबर होता है. cos 30 डिग्री साइन 60 डिग्री के इक्वल होता है. cos 45 डिग्री एंड साइन 45 डिग्री दोनों वैल्यूज इक्वल होती है. देन cos 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री एंड cos 90 डिग्री इज इक्वल टू साइन 0 डिग्री. सो cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1, क्योंकि साइन 90 1 होता है और cos 0 डिग्री और sin 90 उनका वैल्यू इक्वल होता है. देयरफॉर cos 0 डिग्री इज 1, cos 30 डिग्री इज रूट 3 by 2, cos 45 डिग्री इज 1 by root 2, cos 60 डिग्री इज 1 by 2 and cos 90 डिग्री इज 0. The next function is tan theta. Tan theta is sin theta divided by cos theta. So to find values of tan theta, we need to divide values of sin theta by cos theta. So tan 0 degree is 0 divided by 1. And when 0 divided by any number, the answer is 0. So tan 0 is 0. Then tan 30 degree 1 by 2 divided by root 3 by 2, which comes out 1 by root 3. Tan 45 degree 1 by root 2 divided by 1 by root 2 is 1. Tan 60 degree root 3 by 2 divided by 1 by 2, it is root 3. And tan 90 1 divided by 0. Any number when divided by 0, जब किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे, then the answer is not defined, or we can say infinite. So tan 90 degree is not defined. Then cosec theta. Cosec theta is 1 divided by sin theta. 1 by sin theta is cosec theta. So cosec 0 degree is reciprocal of sin 0 degree. So cosec 0 degree is 1 by 0. 1 divided by 0 is not defined. Cosec 30 degree is reciprocal of sin 30 degree, that is 1 upon 1 by 2, that is 2. Cosec 45 degree 1 divided by 1 by root 2. Cosec 60 degree reciprocal of root 3 by 2, it is 2 by root 3. And cosec 90 degree is 1 divided by 1, it is 1. So cosec 90 is 1. Then next trigonometric function is sec theta. Sec theta is 1 by cos theta. 1 divided by cos theta is sec theta. Sec theta की वैल्यूज हम जैसे हमने cos theta की वैल्यूज लिखी थी वैसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं. sec theta और cosec theta की जो वैल्यूज है उनमें रिलेशन होता है.
जैसा साइन थीटा और कॉस थीटा में होता है. सेक 0 डिग्री इज इक्वल टू कोसेक 90 डिग्री, सेक 30 डिग्री इज इक्वल टू कोसेक 60 डिग्री, सेक 45 डिग्री इज इक्वल टू कोसेक 45 डिग्री, सेक 60 डिग्री इज इक्वल्स टू कोसेक 30 डिग्री एंड सेक 90 डिग्री इज इक्वल्स टू कोसेक 0 डिग्री. या फिर रेसिप्रोकल करते हैं हम कॉस थीटा की वैल्यूज का. सो सेक 0 डिग्री इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा. अगर हम करें तो रेसिप्रोकल ऑफ 1, रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज 1. देन सेक 30 डिग्री रेसिप्रोकल ऑफ √3/2, 2/√3. सेक 45 डिग्री 1 डिवाइड बाय 1/√2, √2. सेक 60 डिग्री is 2 and sec 90 degree is 1 divided by 0, not defined. Cot theta is 1 divided by tan theta. So cot 0 degree is 1 divided by 0, not defined. Cot 30 degree is 1 divided by 1/√3, that is √3. Cot 45 degree is 1. Cot 60 degree is reciprocal of √3, that is 1/√3. And cot 90 degree is 1 divided by infinity, that is 0. So cot 90 is 0. So these are the values of different trigonometric function for 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degrees. Thank you for watching. Please like, share and subscribe.